पैदा करना, ये हमारा काम है। Young people have to realize you are a power within yourself. Fatima was asking me earlier to teach you guys or tell you guys few qualities of a good business person. If you want to become a business person, I said I will talk about it when I see you guys. Business is no rocket science. It is not rocket science. We make it to be a rocket science. We come up with strategies, theories, case studies, marketing strategies, expansion plans, funding plans. इन सबसे पहले हम ये भूल जाते हैं बिजनेस चला कौन रहा है, रोबोट या इंसान? इंसान. So what becomes more important? That person. और उस पर्सन के अंदर क्या चीज है उस बिजनेस को चला रही है, उसका जहन. So what becomes more important in the body? The mind. What in the mind is more important? The most important. People, some people will say intelligence. Absolutely not. It's secondary. I have seen more dedicated people succeed than more intelligent people succeed throughout my life. Amazingly intelligent people fail, and I'll tell you the reason why. And amazingly dedicated people, dumb as they were, they succeeded. Why? What is that one thing you need if you want to be a good doctor, good engineer, good businessman, good teacher, good son, good neighbor, good anything? Positivity. Simple. It only comes down to positivity. Why? Why positivity is so important? दुनिया के किसी रिलीजन में और दुनिया के किसी कानून में कोई कानून आपको जब तक आप अमल ना करें आपकी सोच पर आपको सजा नहीं दे सकता. चोरी करने का सोच रहे थे, नहीं किया, दुनिया का कोई कानून आपको सजा नहीं दे सकता. कत्ल करने का सोच रहे थे, नहीं किया, कोई कानून, कोई रिलीजन, कोई कानून. मगर एक रिलीजन है जो सोच में सजा देता है, हमारा इस्लाम. कैसे? मायूसी को कुफ्र करार देती है. मायूसी क्या है? सोच है. क्यों अल्लाह ताला ने एक सोच पे इतनी बड़ी सजा रखी है? क्योंकि उसे पता था दुनिया की हर बुराई की मां उम्मुल खबाइस मायूसी है. एक मायूस, एक काफिर इंसान कम से कम ये तो कह रहा है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, शायद ये वाला भगवान ना करे तो ये वाला कर देगा, ये वाला ना करे तो ये वाला कर देगा. एक मायूस आदमी क्या कह रहा है? एक मायूस आदमी कह रहा है क्या अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की जात है ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता. So what do you need in business? The most important thing you need in business is positivity. मेरी पहली जॉब अमेरिका पहुंचने के बाद was washing bathrooms. And I belong, ये जो अकड़ वाली बात भी बताता हूं, I belong to the Mir family of Hyderabad. Nizams of Hyderabad. Nizam's net worth in today's dollar value is $241 billion. I grew up in a 2-bedroom house. Yeah.
सो हम उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, हमारे पुदीने के बाग थे। हर उर्दू स्पीकिंग कोई ना कोई पुदीने का बाग था। उसी पुदीने के बाग की मोहब्बत में यहाँ कुछ काम ही नहीं करते। पहली जॉब मेरी, आई वेंट, मेरे वाले साहब ने बम, मेटाफोरिक बम मेरे ऊपर फेंका, बेटा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सकूं, है? यहाँ लेकर भी आ गए और तीसरे दिन कह रहे इतने पैसे भी नहीं है कि पढ़ा नहीं सकता, मुझे वापस कराची भेजे। आई लिटरली क्राइड, मुझे कराची भेजे, मुझे नहीं रहता अमेरिका में, लेकिन तुम्हें भी जॉब करनी पड़ेगी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, सब मिला मिलू के आपकी एजुकेशन पूरी होगी। गुस्से में, लिटरली गुस्से में मैं निकला, मैं जॉब करूंगा। बहन के घर उतरे थे हम, तो वहीं रह रहे थे, वहां से कुछ मील सवा मील दूर मॉल था, मॉल के पार्किंग लॉट में बर्गर किंग था। बर्गर किंग में इतना बड़ा लिखा हुआ था, हेल्प वांटेड, अप्लाई विद इन। सो आई वेंट, filled out the application. James Reed, who's still a friend of mine, the manager, came up to me, interviewed me. Where are you from? I said, I'm from Pakistan. Mujheda karke main usko Pakistan. I'm from Pakistan. He doesn't understand the Palestine? Back then we were not the terrorists. No? Back then we didn't say that we were hurt. And then, after interviewing me for 10, 15, 20 minutes, तो जिंदगी की पहली जॉब है मुझे। 15-20 मिनट इंटरव्यू करने के बाद मुझे कहता है वो जॉब इसलिए बत्ती से निकली। So how much does it pay? पाकिस्तानी था ना, सबसे पहले पैसे पूछूंगा। Then $3.35 an hour. इमीडिएटली दिमाग के कैलकुलेटर मैंने कन्वर्ट किया, मैंने कहा मैं तो महल्ले का सब, मैं अमीर बच्चा बन गया। मेंटालिटी हमारी रहते कहीं और है, खर्च कराची में कर रहे होते। सुबह जाएंगे आप, वहां लैंड क्रूजर खरीदेगा जो कि 30 लाख रुपए की होगी, यहाँ पे रुपए 2.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है। We are amazing people, I swear. If you want to find humor within ourselves, us Pakistanis can die laughing at each other. So he says $3.35 an hour. I said, okay, what do I have to do? He goes, you have to clean the tables and mop the floor. Mop the floor? मगर मेरे तो पुदीने के बाग थे, मैं पोछा लगाऊंगा। $3.35 an hour, पुदीने के बाद पोछा $3.35 one. So I said, okay. So then you have to wash the bathrooms too. बहुत सारे पुदीने के बाग थे हमारे। I took that job. Next morning, I had a decent sense of fashion when I was growing up. So when they gave me the Burger King uniform, I swear to God, washing bathrooms didn't hurt me as much as that fashionless uniform hurt me. पोछा लगा रहा था, मजाक नहीं कर रहा, बकेट में मॉप, और मैं ऐसे पोछा लगा रहा था। चौथा दिन था मेरा काम, और तब तक मेरे आंखों से आंसू गिर गए। पाकिस्तान मिस कर रहा था, घर में बोलते थे माँ को पानी पिलाते हैं, ये करते हैं, पराठे बनाते हैं, 8 सालन में नमक इतना ज्यादा क्यों है, सारी अकड़ जो हम बच्चों की 16-17 साल की उम्र में होती। And my manager came from the front and he saw me crying, and that moment changed my life and made me who I am today. That very moment I was crying, and I had my head down, and the manager says to me, Mir, are you crying? I put my head up. Allah जाने कहां से वो मेरे ज़हन में जवाब आया।
आंख मैंने सर मैंने ऊपर किया, मैंने कहा नो टू मच अमोनिया. That very moment I could have made an excuse, made myself into a victim. I could have told them the sad stories of Hyderabad and where I belong to, and what I was, and how degrading it is for me to work like this. How am I a victim? How the partition of India, Pakistan took everything from us. Hey, misery loves company, no? And a miserable person will come up with a story so damn long for the rest of his life. That very moment I decided, nothing is beneath me. I am beneath everything else. I drove taxis. I worked as a security guard. I punched tags in the apparel section of a clothing factory. I worked from 7 in the morning till 11 at night in summers driving a taxi. 11 घंटे के बाद 1 घंटे की ब्रेक मिलती थी उन 16 घंटों में. 7 days a week मैं टैक्सी चलाता था. 16 घंटे रोज. दोस्त छोड़ के चले गए. Friends can't put up with you. Whenever they call, but there was no cell phones then. Whenever they tell you, let's go somewhere, no, I gotta work. No, I gotta work. No, I gotta work. I look back and I realize the only thing that kept me going was positivity. It is better to be an idiotic optimist. Remember this sentence of mine. It is better to be an idiotic optimist than to be an intelligent pessimist. If I am an idiotic optimist, at least Allah is with me. He will finish my idiocy and only leave me a good practical optimist. If I am an intelligent pessimist, Iblis is with me. Iblis का काम क्या है? जो चीज करने जा रहे हैं लॉजिकली आपसे कह रहा है कि नहीं हो सकता. अल्लाह वर्क्स ऑन फेथ. देखा हमने कभी? नहीं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कभी हमने? नहीं. कहाँ कुरान शरीफ उतरा था? देखा हमने? नहीं. इतने आइम्मा गुजर गए? देखा हमने? नहीं. करबला में क्या हुआ था? देखा हमने? नहीं. अल्लाह optimism, faith, works on belief. Iblis works on logic. कोई गरीब नजर आ रहा होगा, जेब में हाथ डालेंगे आप पैसे देने के लिए, तब तक इब्लीस आपको लॉजिकल क्या दे रहे हो, क्या लग रहा है? जर्सी होगा, कल पुल के नीचे नजर आया था हेरोइन है. कराची में थी उतना, पुल के नीचे नजर आया था हेरोइन है. Do you know what's the difference between that heroin and Mir Mohammad AliKhan? Or you? We are so quick to judge people. Huh? What is the difference between a person who is shooting up heroin in his veins underneath a bridge and a person who started a bank on Wall Street? Simple difference. वो अपनी माँ के घर पैदा हुआ, मैं अपनी माँ के घर पैदा हुआ. अगर मैं उसकी माँ के घर पैदा होता, मैं पुल के नीचे बैठा हुआ हेरोइन कर रहा होता. हमारे इख्तियार में कुछ है ही नहीं. जो है उसका शुक्र अदा करें. पॉजिटिविटी के बाद the most important characteristic I want you to develop is thankfulness. कुरान शरीफ में अल्लाह बार बार कह रहा है कि हम नाशुक्र हैं. फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान is what? Surah Rahman is what? It's a complaint.
complained by Allah subhanahu wa ta'ala about us. किन चीजों किन नेमतों को झुठलाओगे? हम सिर्फ आगे की तकों में जो है उसको भूल के ना शुरू करें। और हम चाहते हैं कि अगर हमने अपने दोस्त को एक दिन के लिए लैपटॉप भी उधार पे दिया है ना, तो वो जिंदगी भर याद रखे। याद है तुम्हारे पेपर होने वाले थे, तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया था, मैंने दिया। याद है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं आया था टायर चेंज कर दिया। वो 15 साल तक याद दिलाएगा। याद है हमारी कितनी अच्छी दोस्ती है? और अल्लाह हमें दिए जा रहा है और हम क्या कह रहे हैं? नहीं यार, काश अच्छा हार्वर्ड जाता तो बात थी। telling you, how many of you didn't think about it? I don't know, but I'm sure some of you did. बस में आ रहे हैं तो गाड़ी वाले को देख के, क्या बस में गाड़ी होती तो मजा आता। साइकिल वाला कह रहा है गाड़ी होती तो अच्छा नजर, पैदल वाला कह रहा है साइकिल होती तो अच्छा हो नजर आ रहा है। जिसके दोनों पैर नहीं है वो कह रहा है हाय काश के मैं पैदल ही चल सकता। रिवर्स में जाए और देखें, विदाउट थैंकफुलनेस वी कैन नॉट गेट एनीवेयर इन लाइफ, एनीवेयर। हाउ कैन यू वांट मोर व्हेन यू नॉट थैंकफुल फॉर व्हाट ही इज गिविंग? हाउ कैन यू वांट मोर? And there is nothing wrong with wanting more. फातिमा ने एक और मुझसे बात की कि आप ये बताइए कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा ही अपनी चीज नहीं होती, अभी नहीं होती। I said I disagree with you. I disagree. First of all, money is not the root of all evils. Not at all. आप अपने जहन में तजाद लेके ना चलें। पैसा बनाने की ख्वाहिश रख के पैसा बनाने से नफरत करेंगे, पैसा बनेगा ही नहीं। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल। ह्यूमन बीइंग्स आर द रूट ऑफ ऑल इविल। मनी निखार देती है अंदर का किरदार। मनी और पावर दो चीजें हैं। मेरे मौला अली ने कहा है कि इख्तिदार या पावर या पैसा देकर किसी इंसान को देख लो, उसकी फितरत नजर आ जाएगी। अगर वो कमजर्फ होगा तो पैसा और पावर वो कमजर्फी निखार के ले आएगी बाहर उसको। He'll become arrogant, he'll become private, he will become फिरौन। और वही पैसा $400 million a year उसको ईटी भी बना देगा। So never ever hate money, number one. Make money the right way and give it all away if you want. Secondly, for the young people, I want you to know, all over Pakistan I go, everybody has what I call ET mentality. हर कोई, सर मैं चाहता हूँ गरीबों के लिए ना 50,000 घर बना के मुफ्त दे दो। जेब में कितने पैसे बेटा? 350 रुपए। तो मेरे बच्चे पहले अपने आप को उस काबिल करो कि 2 घर बना के दे दो। उससे पहले ये काबिल करो कि 4 दफा कपड़े बना के किसी को दे दो। उससे पहले ये अपने आप को काबिल करो कि एक वक्त की रोटी हफ्ते में 1 दफा किसी को खिलाते रहो। फर्स्ट डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग। Once you develop a habit of giving, you will see how much you start to receive from sources unknown. For you guys to hear a Wall Street money hungry investment banker talk about Allah, obviously it's a long damn journey that I have come to. Develop thankfulness in yourself. Business, there is no perfect timing. Remember that. Never think that there is some perfect timing that you'll start a business. There is no perfect age. My mom
who established this university as well. Agha Sarab. Started the bank at the age of 54. 54 and turned it into a $19 billion institution. Where do you get the damn motivation to start something at 54? Yeah. There is no perfect timing. There is no perfect funding. There is no perfect teacher for business. There is no perfect mentor. इन सब चीजों के इंतजार में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। ये इस तरीके से कि जैसे स्विमिंग पूल से बाहर बैठकर हर उस आदमी से पूछे कैसे स्विमिंग की जाती है जो स्विमिंग पूल से बाहर हो, और वो हर तरीके से आप बेटा ऐसे करना, सीधा हाथ ऐसे डालना, उल्टा हाथ ऐसे डालना, ऐसे जिस्म रखना, 70 साल गुजार देंगे आप स्विमिंग पूल से बाहर बैठे हुए। बनिस्बत उसके अकल यूज करके जो शैलो में कूद गया। शैलो में कूदना बिजनेस में क्या चीज है? जितने रिसोर्सेज है उससे शुरू करें। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन लाइफ। देयर इज नो परफेक्ट फंडिंग, देयर इज नो परफेक्ट प्रोडक्ट, देयर इज नो परफेक्ट बिजनेस प्लान। द गोल ऑफ अ बिजनेसमैन is to pursue everything to make it perfect over his life. His entire lifetime. Spend his entire lifetime dedicated to making the product that he came up with perfect. कभी नहीं बनेगी, हो ही नहीं सकता कि आपको लगेगा परफेक्ट बन गई। हेनरी फोर्ड ने टी मॉडल फोर्ड को समझा था परफेक्ट थी, अब आप टेस्ला को देखेंगे बोलेंगे पागल था। पहला प्लेन जो उड़ा था पैसेंजर प्लेन, उसको देख लें और दूसरे प्लेन्स को देख लें, जेट प्लेन्स को देख लें। योर जॉब इज ओनली, लाइफ इज लाइक अ रिले रेस। रिले रेस है जिंदगी। रिले में 3 होती है टीम्स, जिंदगी में बहुत होती है। आपका काम है आपके हाथ में जब वो रिले स्टिक हो तो इतनी खुश असलूबी से भागे, इतनी तेजी से भागे और कभी शक ना करें कि जिसको मैं लकड़ी दूंगा वो आगे सही से नहीं भागेगा, तो 1 सेकंड रुको यार, मैं देखता हूं कोई अच्छा वाला जब मिले ना तो मैं उसको दूंगा। स्टार्ट अ बिजनेस with whatever little resources you have. I was sitting with Bill Gates at a conference, and I told Fatima, I'll tell this story to you guys because you guys look up to all these guys like they're gods. Astaghfirullah. India, Pakistan, Bangkok, Sri Lanka, यहाँ की यूथ को मैंने देखा है, उनसे बोलो यार, I was with Steve Jobs. सलाम के साथ I think an investment bank, being a chairman of an investment bank for Wall Street, you meet them like you guys met Manshah Saab yesterday. It's normal. At a conference, we were sitting, हर टेबल पे 6 लोग थे और एक, you want to call it mentor, chairman of a company. मेरी किस्मत में Bill Gates आए. And I asked him, everybody had to ask a question. सबने सवाल पूछा. I was the youngest one there, I was scared and I was in awe. हाँ, और क्या 70 बुरे मिल गए. इकोनॉमिक जिहादी था ना, तो जिहादी भी तो हर चीज यही सोचता है. मेरी बारी आई तो मैं सर से, Bill, what makes you wake up in the morning? Since you're so rich. I was ignorant, I was young, I only looked at life from money perspective. जिसके पास इतना पैसा हो वो सुबह उठे क्यों? सब सोचते हैं इतना पैसा उठे क्यों? तो 24 घंटे सोता ही रहेगा. He smiled and I think he realized my hypocrisy. He smiled and he says, the fear that some 16-year-old child
Working out of a garage will put me out of my business. Technology business में था ना वो. What he meant was, I understand. कि somebody will come up with such a good project or a product, 16-17 साल का ही होगा, and it'll catch on, and it'll put me out of business. And I say, and how do you protect yourself against that? And he said, which I practice this thing. He said, I surround myself with people much smarter than me. They don't let me make a mistake. So, to all your founders and co-founders of companies, the egotistical CTOs and CMOs and COOs and CEOs who are running after titles, your title doesn't matter. Give me a title of Chief Chaprasi Officer and give me a company's net worth $50 million, I'll gladly take it. I'll gladly stand at the front of the building and गाड़ियां park करूंगा, Chief Chaprasi Officer. Ego खत्म करने का सबसे पहले अपने अंदर. Co-founder doesn't mean anything. Build a team together. Your team matters. Your title doesn't. दो लोग हैं ना. और to the ones who don't want to be entrepreneurs, I salute you. Literally, I salute you for not trying to be entrepreneurs. You may say, what is Mir Sahab saying? I salute you because if every person in this world wanted to be an entrepreneur, who the hell would be the team member? Who would be the team? Everybody wants to be a founder, where would be the team? And without a team, how would they be a business? So for the ones who don't want to be entrepreneurs, please join hands with entrepreneurs. Be part of the team. Steve Ballmer was never an entrepreneur, ran Microsoft, just as rich as Bill Gates. Find like-minded people. Look at the future of Pakistan. Pakistan's future is extremely bright. We have CPEC coming up. CPEC, people say, is a game changer. I say, no, it's not a game changer. I have yet to find a word that can be bigger, better than game changer. I haven't found it. It will create a $2.4 trillion trade economy within 40 countries a year. I don't want to go into very much details of CPEC. You guys can see my videos I have made on CPEC. You can download them and explain in detail what CPEC is. Prepare yourself for a bright future. Prepare yourself for positivity. Without positivity, you cannot get anywhere in life. Just remember these two things, positivity and thankfulness. This country has a great future. जो भी यहाँ पे गलतियां हैं, गंदगियां हैं, आप लोग सही करेंगे. यूथ को बार-बार कहा जाता है, you are the future. No, guys, you are not the future. झूठ बोल रहा है जो आपसे. You are the present of Pakistan. You are. ये बार-बार फ्यूचर कह के ना लेजी बनाया जा रहा है. मेरी तो बारी नहीं आई अभी. 2023 में आएगी. सब बैठे हुए हाथ पे हाथ बैठे और जैसे ही कोई जलसा हुआ पहुंच जाते हैं वोट देने के लिए. I belong to no party. Definitely not NQ. जो कराची से आकर कहते हैं भैया भाई के यहाँ. बाय बाय. ऐसा भाई होता किसी को ना. Remain positive in Pakistan, and I think I'll end my whatever talk I'm giving here, and I would like to take a few questions because it's very easy to talk and leave and leave questions in your minds. I would rather stop here and take questions from you guys.